अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिस डिवाइस का इंट्रोडक्शन देंगे इस डिवाइस का नाम है Samsung Galaxy A54। अब हम इस डिवाइस की डिटेल में स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। Samsung Galaxy A54 X release 2023, the 24th of March, 202 grams, 8.2 mm thickness, Android 13, One UI 5.1, 128 gigabytes, 256 gigabytes storage, micros 6.4, 1080 times 2340 pixels, 50 MP 2000, 160p 6, 8 gigabytes. RAM Exynos 1380 5000 mAh Leap Network Technology GSM HSPA LTE 5G LAUNCH announced 2023, the 15th of March. Status coming soon. X release 2023, the 24th of March. BODY dimensions 158.2 times 76.7 times 8 2 mm 6.23 times 302 x 032 in. Weight 202 grams 7.13 ounces. SIM single SIM, nano SIM, eSIM or hybrid dual SIM, nano SIM, dual standby, IP67 dust, water resistant, up to 1 meter for 30 minutes, display type Super AMOLED, 120 Hz, 1000 nits, HBM, size 6.4 inches, 100.5 square centimeter, approximately 82.9% screen to body ratio, resolution 1080 times 2340 pixels, 19.59 ratio, approximately 403 ppi density, platform OS Android 13, One UI 5.1 chipset Exynos 1380 5nm, CPU Octa-Core, 4x 2.4 GHz Cortex A78 and 4x 2.0 GHz Cortex A55, GPU Mali-G68 MC4 MEMORY card slot, micros. Uses shared SIM slot, internal 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM. Main camera triple 50 MP f1.8 wide, PDAF OIS 12 MP f2.2 123 ultra wide, 1.12 m5 MP f2.4 macro. Features LED flash, panorama, HDR video 4K 830 fps, 1080p 830 60 fps, 720p 8480 fps. Selfie camera single 32 MP f2.2 26mm wide, 12.80.8 m video 4K 830 fps, 1080p 830 fps. Sound, loudspeaker yes, with stereo speakers, 3.5mm jack, no comms, WLAN, Wi-Fi 800 2.11a B G N AC 6, dual band, Wi-Fi direct, Bluetooth 5.3, a 2DP, LE positioning, GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NFC-S. Market, region dependent, radio no, USB Type-C 20, OTG. Features sensors, fingerprint, under display, optical, accelerometer, gyro, compass, virtual proximity sensing, battery type LiPo 5000 mAh, non-removable charging, 25W wide, MISC colors lime, graphite, violet, white. Models SMMA 546V, SMMA 546U, SMMA 546 U1, SMMA 546B, SMM a 546B, DS, SMM a 546E, SMM a 546E, DS, SMM a 5460 Saudi Riyal and 81 Halala W, kg, head, 0.67 W, kg, body, SAREU 0.69 W, kg, head, 1.34 W, kg, body, price 489 euros. अब हम इस डिवाइस की पिक्चर्स को देखते हैं, साथ में इसके स्पेसिफिकेशन को ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन साइज़ के बारे में। 6.4 इंच स्क्रीन साइज़ है, काफ़ी अच्छा स्क्रीन साइज़ दिया गया इसमें।
और इसकी जो स्क्रीन बॉडी रेशो है, स्क्रीन टू बॉडी रेशो वो भी काफ़ी अच्छी दी गई है। जो स्क्रीन रेजोल्यूशन वो भी बेहतरीन दी गई इसमें। अगर स्क्रीन की पिक्सल की बात की जाए वो भी बहुत अच्छे देंगे इसमें। 1080 मल्टीप्लाई बाय 2340 पिक्सल देंगे इसमें। इस डिवाइस में आपको कलर कम्बिनेशन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और कलर्स के रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी इसमें। और बात करें इसके कैमरे की, 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर कैमरा दिया गया है, जिसके पिक्सल काफ़ी अच्छे हैं और इससे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स और वीडियो देखने में मिलेंगी। आप इस डिवाइस के कैमरे से एक अच्छी रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। पिक्चर्स का डे लाइट में आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा और साइड में भी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन नाइट मोड में आपको थोड़ा सा कलर कम्बिनेशन में इतना अच्छा नहीं मिलेगा, थोड़ा डार्क मिलेगा कलर कम्बिनेशन उसमें। डे लाइट में आपको बहुत कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा मिलेगा, पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन मिलेगी। इससे आप अच्छी पिक्चर्स और वीडियोज़ बना सकते हैं। साथ में आप बात करें रैम की, और रैम के लिहाज से देखें तो काफ़ी अच्छी रैम दी गई इसमें। बेसिक वेरिएंट जो है 6 GB में आएगा और जो इसके बाद जो वेरिएंट आपको मिलेगा वो 8 GB वेरिएंट मिलेगा रैम में। और 6 GB वेरिएंट की बात करें तो फिर भी काफ़ी बेहतरीन रैम दी गई इसमें। आपको जो डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन मिलेगी, स्पीड भी बहुत अच्छी मिलेगी इसमें। 8 GB रैम के वेरिएंट की बात करें तो इससे आपको और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी और स्पीड भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। अगर इस दोनों वेरिएंट से आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग की भी आपको स्पीड दोनों वेरिएंट में बहुत अच्छी मिलने वाली है और ग्राफिक भी आपको गेम के काफ़ी अच्छे मिलेंगे इसमें। आपको परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर मिलेगी इसमें। अगर चिपसेट की बात की जाए तो Exynos 1380 चिपसेट लगा। चिपसेट जो हम यूज़ करने लगा वो लेटेस्ट रेंज चिपसेट नहीं लगा इसमें, लेकिन ये भी आपको काफ़ी अच्छी डिवाइस की परफॉर्मेंस आपको देगा। अगर बात करें इसकी बैटरी की तो काफ़ी अच्छी बैटरी लगाई है, 5000 mAh की बैटरी लगाई है, जो आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलेगा इससे। अगर इस बैटरी से आप गेमिंग वगैरह करते हैं आपको काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मिलेगा, 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल सकता है PUBG वगैरह खेलते हैं तो। और अगर देखा जाए तो इसमें आप स्टोरेज कितनी अवेलेबल है, स्टोरेज ये 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, 128 GB 256 GB वेरिएंट में अवेलेबल है। अगर एंड्रॉयड की बात की जाए जो 13 एंड्रॉयड आता है इसमें और One UI 5.1 आता है, जो इसका वेट 202G है। थिकनेस की बात करें 8.2 mm थिकनेस है इसमें। ये काफ़ी स्लिम फ़ोन नहीं हो सकता, लेकिन साइडों से ये थोड़ा सा मोटा लगता है। और वेट के लिहाज से देखें तो ये वेट भी थोड़ा सा काफ़ी वेट लगेगा आपको, थोड़ा सा पकड़ने में मेटल फील होगा कि वेट ही फ़ोन है। और अगर इसके कैमरे की बात की जाए तो काफ़ी बैक साइड में काफ़ी अच्छे अंदाज में कैमरा पुट किया गया है, साथ में LED फ्लैश भी दी गई है और ये काफ़ी सारे वेरिएंट में अवेलेबल है। और इसके साथ जो आपको चार्जिंग केबल मिलती है 2.0 OTG केबल मिलेगी आपको। काफ़ी अच्छा और इतना स्लिम तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा मोटा ज़रूर लगता है, लेकिन आपको पकड़ने में अच्छा भी लगेगा फ़ोन और स्टाइलिश भी है। काफ़ी सारे वेरिएंट में भी अवेलेबल है। इसके साथ जो चार्जर मिलेगा वो 25 वाट का चार्जर मिलेगा। आपकी बैटरी जो है वो काफ़ी जल्द चार्ज करने में हेल्प करेगा।